Fine. So let's continue with 2020 question paper of geography. That what kind of questions have been asked in 2020? That's what we'll try to understand. And if there is any change in the trend of the questions in 2020 compared to 2017, 18, 19, that also we'll try to understand. So can you all see the question paper on your screen? Is it visible to all of you? Yes, sir. So we will be checking the geography questions of current affairs, core geography questions, and geography applied in environmental science. Question number 65, not geography question, but connected with the geography with international organization. Which one of the following groups are all 4 countries member of G20? G20 group of countries. All of you know, हमने करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर क्लास में डिस्कस किया था G20 you know the countries. So G20 is a group of which countries? Lavanya. G20 is a group of developed countries or underdeveloped countries or developing countries. Anyone remember? Developed and developing countries. Yes, it is a group of both developed as well as major developing economies in the world, right? That is a group G20, right? The question पूछा है, in which of the following groups are all 4 countries are members of G20? मतलब ये 4 ग्रुप के नाम दिए हुए हैं A, B, C, D. We need to find out that which of the group includes all the members of the G20, right? So Argentina, Mexico, South Africa, and Turkey. Then I give an option Australia, Canada, Malaysia, and New Zealand. Then Brazil, Iran, Saudi Arabia, and Vietnam. Indonesia, Japan, Singapore, and South Korea. So out of G20 countries, इसमें से कौन से ऐसा ग्रुप है जो सारे G20 के पार्ट है? Yes. Is Argentina a part of G20? अर्जेंटीना है, शायद मैक्सिको नहीं है. आई गेस मैक्सिको इज नॉट अ पार्ट ऑफ G20 maybe. So in second Australia, in second Australia is there, Canada is there, Malaysia is there, New Zealand I'm not sure about it. Brazil, Iran, Saudi Arabia, Vietnam नहीं होगा. Indonesia, Japan, Singapore, South Korea. Fine. So G20, Malaysia and New Zealand. Is New Zealand part of G20? No, sir. No, New Zealand, because it's a very small country. तो ये नहीं होगा. See, G20 group, जब आपको ये पता है कि G20 is a group of developed, तो you can easily find out. Developing में क्या है? Not all developing countries are the part of the G20. No, emerging and large economies like India, South Africa, और ऐसे ही countries उसमें हैं, right? I think Saudi Arabia is a part of G20. ब्राजील है, ईरान एंड वियतनाम शायद नहीं हो सकता. इंडोनेशिया, yes, it could be there. Japan is a developed nation. Singapore and South Korea. So I'm having doubt about Singapore because it is a city state. एक छोटा सा शहर है. तो ये पार्ट है या हाँ? Yes. Singapore is no, sir. Singapore is not there. So what should be the answer then? Yes, sir. Mexico is in there, sir. Okay, good. So Singapore is not there. Mexico is also like India. So A should be the answer of this question. That is Argentina and Mexico, South Africa, and Turkey. Good. So this is not geography as such, but world international organization या international groupings question. But कौन से countries कहाँ पर located है
accordingly you can solve this question. Now question number 68, the rivers and flows into, कौन सी river कहाँ flow होती है, क्वेश्चन पूछा गया है, world geography question. Now this time they have asked questions on the world rivers, not Indian rivers but world rivers उन्होंने पूछना शुरू किया था. So the name of the river is Mekong. Do you remember? हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था 2018 या 19 में, Mekong Ganga cooperation. Question was asked related to that. So at that time you were supposed to go and check it out where exactly this Mekong river is located, in which country it is located, और एक कौन से seas में ये drain हो जाती है, flows into what. So Mekong Andaman Sea, I think this is correct. Mekong river is in Myanmar. तो म्यांमार में म्यांमार से वो होकर नीचे अंडमान सी में शायद आती होगी. Second, Thames River. Thames River is again, any idea which popular city is located on the river bank of Thames? London. Do you know London? London is located on Thames River. Yes. So if London is located on Thames River, so is it flowing into Irish Sea? Irish, Ireland के आसपास में है. Volga is again one of the important river of Germany. So drains into Caspian Sea. Zambezi, Indian Ocean. Zambezi River is in Africa. तो क्वेश्चन पूछा गया है, which of the above pairs are correctly matched? Correct match पूछा गया. If you look at option 1 and 2, 3 only, 3 and 4 only, 1, 2 and 4. It means there is at least one river which is not correctly matched. कोई एक river है जो correctly matched नहीं है, right? So 1, 2 and 4. Volga River, just check it out. Volga River is in Germany. मुझे लगता है Volga River flows towards north and not towards south. तो Volga River drains into Caspian Sea or not? Volga. गूगल में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा. बट एनीवेज आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज के जो रिवर्स हैं उसके बारे में उन्होंने पूछा हुआ इन वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास व्हेन वी विल डिस्कसिंग द physical features of the world geography. At that time we have discussed these rivers, that where this Mekong river is located, where this Thames river is located, Volga river, important rivers of Africa like Zere river and Nile river, Zambezi river. There are so many important rivers in Africa. You need to check it out before the exam. Important सी जैसे आप इंडिया के देखेंगे वैसे वर्ल्ड important rivers, sorry not sea, important rivers of the world, that's what you will check it out. Is it clear? So note down this topic, important rivers of the world in our continents. Now let's move on to the next question. Which one of the following protected areas are located in Kaveri Basin? Kaveri River and protected areas, matlab national park, then tiger reserve, wildlife sanctuaries. You remember I told you that you need to know which which reserves, which national parks are located in Northeast India. तो पिछले 2-3 साल से लगातार they have asked questions from the Northeast India. But this time in 2020, they have asked the protected areas of South India, that is Kaveri Basin, right? So Nagarhole National Park, Papikonda National Park, Satyamangalam Tiger Reserve, and Wayanad Wildlife Sanctuary. तो कौन से कावेरी बेसिन में लोकेटेड ऐसे पूछा गया है. तो नागरहोले आई थिंक इट इज देयर इन साउथ, बेंगलोर के आसपास ही है. एंड कावेरी रिवर शायद बेंगलोर से के आसपास से चली जाती है. तो नागरहोले शुड बी देयर. पापिकोंडा मस्ट बी इन आंध्र प्रदेश. सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व दैट आल्सो मस्ट बी इन आंध्र प्रदेश और मे बी तेलंगाना. तो Tamil Nadu, sir. तमिलनाडु, Satyamangalam. सत्यमंगल. Okay, Tamil Nadu. So is it on Kaveri River? Yes. Wayanad is in Kerala, but हो सकता है some of the water basin पूछा है ना उन्होंने. They have asked the basin. Basin means जहाँ से कावेरी नदी को वाटर सप्लाई होता है, that is called as basin.
So Papikonda is in Andhra Pradesh. So agar if we eliminate two, let's check it out. We can eliminate A, we can eliminate D. Nagarhole is also there. So I think 1, 3, and 4 should be the answer. Just confirm it once again whether this is the correct Yes, answer or sir. not. Yes, Yes, this sir. is correct answer. Right. तो एग्जाम में आपको क्या करना है? All those national parks, wildlife sanctuaries, and tiger reserves and biosphere reserve, if they are in news, you need to note it down. और वो एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेटेड है, कौन से रिवर के आसपास में लोकेटेड है, व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ दैट टाइगर रिजर्व या प्रोटेक्टेड एरिया या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सा एनिमल के लिए वो किया गया है, कहाँ से वो ओरिजिन होता है, कहाँ से वो एंड होता है. All these things you need to check it out with respect to that another protected area which is in the news. This is an environmental question, but again connected with the geography. Is it clear? Yes, sir. Check. Similar question, question number 77, that is, which of the following are most likely places to find musk deer? Musk deer. Musk deer मतलब क्या? Musk deer means एक हरिण आहे आणि त्याच्या बेंबीवर एक सुगंधी असा वास येतो म्हणतात त्याला. आय थिंक काहीतरी शब्द आहे त्याला. सो मस्क डिअर, सॉरी, कस्तुरी. कस्तुरी, राईट. तो भारतामध्ये कस्तुरी हरिण खालीलपैकी कुठल्या भागामध्ये नॅचरल हॅबिटॅटमध्ये सापडतात असा प्रश्न विचारलाय. नॅचरल हॅबिटॅट. 2017 or 18 question paper, there was one question that in which among the following areas, gharials are naturally found. You remember that question? Gharial, that is gharial crocodiles, are found in which places? That answer was Chambal River. You remember that question? So this time they have asked India में musk deer कहाँ पाए जाते हैं? In which areas they are naturally found? Options are Ascot Wildlife Sanctuaries, Gangotri National Park, Gangotri, Uttarakhand. You remember? Kishanpur Wildlife Sanctuaries and Manas National Park. I think Manas is in Manas में भी उत्तराखंड में ही है शायद इसमें भी. So select the correct answer using the code given below. 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, 1 and 4. So I think answer should be 1 and 2 only, sir. 1 and 2, Ascot and Gangotri. Good. Yes, sir. Check. Fine. Next question, which one of the following protected area is well known for the conservation of subspecies Indian swamp deer? See, यहाँ पर musk deer के बारे में पूछा है in 77, and here they have asked Indian swamp deer. Swamp deer means swampy area में रहने वाला. Swampy म्हणजे गाळाच्या प्रदेशामध्ये किंवा चिखल प्रदेशामध्ये राहणारा जो हरिण आहे त्याचा प्रश्न विचारलेला आहे. सो इंडियन स्वॅम्प डियर, दॅट इज बारासिंगा, that thrives well on hard ground and is exclusively ग्रामिनिवोरस. तो ये बारासिंगा कहाँ पाया जाता है क्वेश्चन पूछा गया है. बारासिंगा. तो ऑप्शन आर कान्हा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ताल चप्पार वाइल्ड लाइफ फंड. सो कहाँ पाया जाता है बारासिंगा? Well known conservation of the subspecies of Indian swamp deer, that is Barasinga. Yes. Yes, sir. Yes, Shweta. Option C, Mudumalai Wildlife Sanctuary. A, sir. A, कान्हा नेशनल पार्क. कान्हा नेशनल पार्क. ओके. और ये कौन से स्टेट में है? मध्य प्रदेश. Fine. All of you will go and check it out where all these national parks are located. Kanha national parks are located in which state? Manas national park are located in which state? Mudumalai wildlife sanctuary is located in which state? And Tal Chappar wildlife sanctuary is located in which place? और जब ये wildlife sanctuaries होते हैं तो they are created for protection of any specific the animal. तो जैसे कान्हा नेशनल पार्क में बारासिंगा को प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए किया गया है, तो वैसे दूसरे जो नेशनल पार्क्स हैं वो कौन से एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए या उसको कंजर्व करने के लिए सैंक्चुरी डिक्लेयर किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा. दैट्स व्हाट यू नीड टू गो एंड चेक इट आउट. दिस इज एनवायरमेंटल स्टडीज क्वेश्चन एक्चुअली. व्हेन आई विल टेक द एनवायरमेंटल स्टडीज क्लास, तो उसके बाद वी विल डिस्कस दिस वंस अगेन. आई एम लुकिंग फॉर द
कोर ज्योग्राफी क्वेश्चन। मुझे लगता है इन 2020 देयर वर नो कोर ज्योग्राफी क्वेश्चन फ्रॉम फिजिकल ज्योग्राफी और फ्रॉम द वर्ल्ड ज्योग्राफी, बट एनीवेज यहाँ पर एक क्वेश्चन दिख रहा है क्रॉपिंग पैटर्न से रिलेटेड। द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर। अच्छा, डू यू रिमेंबर yesterday we have discussed temperate zone का क्वेश्चन 2018-19 क्वेश्चन पेपर। टेम्परेट जोन अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और बिलो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है कि इन इंडिया देर आर टू जोन्स। Above the tropical curves. वेरी गुड समय। आपको पता है हमने डिस्कस किया था इन इंडिया देर आर टू द जोन्स, बिलो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यू रिमेंबर दैट? Hmm. तो मिडल मतलब यहाँ से गुजरात से एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, हाँ. गुजरात, देन मध्य प्रदेश, देन झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, ऐसे होता है। तो इसके ऊपर जो है दैट इज द ट्रॉपिकल जोन और नीचे जो है, सॉरी ऊपर जो है वो टेम्परेट जोन है एंड नीचे जो है दैट इज द ट्रॉपिकल जोन। यू रिमेंबर दैट इंडियन ज्योग्राफी में हमने डिस्कस किया था। ये इसीलिए उसको above बोला जाता है. राइट। सो द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर। तो एक क्रॉप का डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि ये जो क्रॉप है वो सब ट्रॉपिकल इन नेचर। तो सब ट्रॉपिकल है मतलब साउथ इंडिया में होगा या नॉर्थ इंडिया में होगा? यस फरजाना, सब ट्रॉपिकल मीन साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया? South India, sir. साउथ इंडिया, राइट। सो द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर। अ हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजुरियस टू इट। हार्ड फ्रॉस्ट मतलब बहुत कम ठंडी अगर रहेगी तो इस क्रॉप के लिए अच्छा नहीं है। इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 200 फॉस्ट फ्री डेज, मतलब फॉस्ट फ्री मतलब फ्रॉस्ट नहीं होना चाहिए, एंड 50 to 100 मीटर सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। अराउंड 50 to 100 मीटर सेंटीमीटर रेनफॉल होना चाहिए, ज्यादा बारिश भी नहीं होनी चाहिए फॉर इट्स ग्रोथ। A light, well-drained soil capable of retaining the moisture is ideally suited for the cultivation of the crop। तो ये इस किस तरीके का सॉइल चाहिए? लाइट वेल ड्रेन सॉइल इज आइडियली सुटेबल और कैपेबल फॉर रिटेनिंग द मॉइस्चर। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग दैट क्रॉप इज। तो नीचे से कौन सा क्रॉप है से पूछा गया। ऑप्शन है कॉटन, जूट, शुगर केन, टी। नाउ टेल मी, टी इज ग्रोन इन विच पार्ट ऑफ द कंट्री? नॉर्थ ईस्ट में। यू रिमेंबर नॉर्थ ईस्ट, असम टी, दार्जिलिंग टी। So that could be a correct answer? No, right? Because tea is located in temperate zone, right? Not in, in the tropical zone. Am I right, Farzana? So we can eliminate this. Second, sugar cane. क्या sugar cane के लिए, 50 to 100 centimeter rainfall and light well drained soil? Sugar cane के लिए no, that is also not because sugar cane require a lot of water. Jute is also not because jute is also grown above the tropic of cancer, that is in Bihar, West Bengal, etc. So this can be cotton. महाराष्ट्र, is it located below? कॉटन का सबसे ज्यादा जो कल्टीवेशन है that happens in महाराष्ट्र, गुजरात, some part of मध्य प्रदेश and तमिलनाडु। तो all these states are located below the tropic of cancer। तो कॉटन के लिए यस, कॉटन को जब हार्वेस्ट किया जाता है तो it requires frost free drains। So cotton should be the answer of this question। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है? दे हैव गिवन अ डिस्क्रिप्शन अबाउट अ क्रॉप, वो कौन से एरिया में ग्रो हो सकता है। तो क्रॉपिंग पैटर्न, आई विल बी गोइंग टू डिस्कस द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ इंडिया इन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया क्लास। क्लाइमेट के बाद शायद आई विल बी डिस्कसिंग द फॉरेस्ट इन इंडिया, आई विल बी डिस्कसिंग द क्रॉप्स इन इंडिया, आई विल बी डिस्कसिंग द मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। तो उससे आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इज इट क्लियर? Sir. चल, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 88। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, नॉट ज्योग्राफी, बट यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली अवेयर पर्सन, मतलब जो ग्रेजुएट व्यक्ति है जो अवेयर है, उनके लिए इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होता है। मतलब यूपीएससी के एग्जाम के लिए बिलीव मी, इन यूपीएससी एग्जाम कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि नॉट नेसेसरली यू नीड टू have a coaching or you need to study the UPSC study material only। Aware person can also solve at least 30 to 40 questions if he use his common sense, right? Statement है सोलर पावर। ऑल ऑफ सोलर पावर हमने कल भी डिस्कस किया था। सोलर पावर से रिलेटेड एक योजना के बारे में आया हुआ था ऑन इकोनॉमी पेज। किसी को याद है? गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू
extent one of the sorry PM Kusum. yes, PM Kusum. Related to what, Shweta? Solar power. Solar pumps, giving subsidy to the solar pumps, like agricultural solar pump. अब उसमें भी the government is thinking about giving subsidy to the battery storage systems as well, right? अब battery storage system पे subsidy नहीं दिया जा रहा था. The subsidy was given only for the the pumps, or it was being given for the solar panels. But now government is thinking about to give the subsidy to the battery storage systems as well, right? So solar power, all of you know. So solar power can be used for running surface pumps and not for submersible pump. Is this statement correct or wrong? सोलर पंप के बारे में कल के न्यूज़पेपर में आया था, कृषि पंप. तो ये जो सोलर पावर है सिर्फ सरफेस पंप के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है एंड नॉट फॉर द सबमर्सिबल पंप. सबमर्सिबल पंप मतलब क्या? यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबमर्सिबल पंप? पाण्याच्या आत जो सबमर्सिबल पंप असतो, बोर मध्ये जो खाली जमिनीच्या आत जो सोडलेला असतो मोटर और पंप, तर त्यासाठी सोलर पॉवर यूज केला जाऊ शकतो का नाही? दिस स्टेटमेंट, व्हाट यू थिंक, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और रॉन्ग? Wrong, sir. Wrong. Solar power can be used for submersible pump as well, not for submersible pump. जो लिखा हुआ है गलत है. आपने अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व किया होगा आपके आसपास में, जहां पर जिसके पास में भी सोलर पंप है, यू कैन सी ऑलमोस्ट ऑल द सोलर पंप्स आर submersible only, majority of them. Am I right? So first statement is wrong. Second statement. So in statement based questions, what we try to find out, क्या हम फॉलो करते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में? मतलब यहां पर भी हमने क्या किया, सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पंप एंड नॉट फॉर सबमर्सिबल पंप. इस पे हमने फोकस किया कि ये नॉट फॉर सबमर्सिबल पंप जो है ये सही है या गलत है, हमने उसको फाइंड आउट करने की कोशिश की, राइट? तो सेकंड स्टेटमेंट में भी वी विल ट्राई दैट इफ देयर इज एनीथिंग could be wrong in the second statement. Solar power can be used for running centrifugal pumps and not the ones with piston. अगेन इट इज अ टेक्निकल क्वेश्चन नाउ. मतलब ये सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के लिए ही यूज किया जा सकता है, नॉट द वन विद द पिस्टन. जिसमें पिस्टन है उसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लिखा है. अब एग्जाम में आपको पता नहीं है, ऐसे हो सकता है ना. देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी यू आर नॉट अ स्टूडेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और यू आर नॉट अ स्टूडेंट ऑफ दिस. तो आपने एग्जाम में आप सपोज आपको ऐसा स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट में यू आर वेरी श्योर कि ये नॉट फॉर सबमर्सिबल पंप जो है आप फाइंड आउट कर रहे हो, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट के बारे में आपको पता नहीं. यस. तो अब नॉर्मली जिस स्टेटमेंट के बारे में जिसके बारे में आपको पता नहीं होता, अगर कुछ दिया होता है तो ऐसे स्टेटमेंट हम क्या कंसिडर करते हैं? अच्छा, कंसिडर करो या ना करो, बट आपको यहाँ पर आपको 50% तो आपको पता चल गया है कि आंसर कैन नॉट बी ए एंड इट कैन नॉट बी बोथ 1 and 2. एम आई राइट? अब आंसर रह गया क्या? 2 ओनली एंड नीदर 1 nor 2. तो अब दोनों में से आपको एक मार्क करना है. तो एग्जाम में आप क्या करोगे? यू विल मार्क ईदर 2 ओनली और यू विल मार्क नीदर 1 nor 2. बट इफ आई वाज देयर इन एग्जाम हॉल, I would have marked 2 only, because second statement I will consider correct. Clear? So just confirm it whether the 2 only is the answer or neither 1 nor 2 is the answer. D, sir. D, neither 1 nor 2. Okay. Fine. Now let's move on to the next question. फर्टिगेशन. फर्टिगेशन मतलब इरिगेशन सिस्टम में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना. दिस इज ज्योग्राफी, नॉट ज्योग्राफी बट एनवायरमेंटल स्टडी का क्वेश्चन है. वी विल डिस्कस इन ज्योग्राफी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 92 मिनरल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है. विच ऑफ द अबव आर ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ मेजर मिनरल्स? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स. लाइक पिछले 2-3 साल से लगातार 2017, 18, 19 में आपने देखा होगा क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड अबाउट द माइनर मिनरल्स एंड मेजर मिनरल्स. एम आई राइट? Copper, they have asked questions about whether the state government have the power to allocate the major minerals or minor minerals, critical minerals. You remember? Minor minerals, major minerals and critical minerals. What are these? You will go and study and वो इंडिया में कहाँ पर पाए जाते हैं आपको देखना है. In India, which of the above is officially designated as a major minerals? So sillimanite, kyanite, chromite and bentonite.
इसमें से क्रिटिकल मिनरल या माइनर मिनरल कौन सा है? दैट इफ यू आइडेंटिफाई देन यू कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, go and check it out. Difference between minor minerals, major minerals, example of the minor minerals and example of the major minerals and example of the critical minerals. That's what you need to study. Clear? What is the Yes, answer sir. here? If anybody is having answer key, just check it out. D, sir. D, 2, 3 and 4. So bentonite is not a major mineral, it is a minor mineral. Check. Question number 93 है ocean mineral temperature. That ocean mineral mean temperature that we will discuss in basics of geography class. उसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 95, India's desert national park. इंडिया में डेजर्ट कहाँ पर है? Which state is having desert in India? Rajasthan. Of course. तो फिर ये डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में ही होगा. Yes, sir. So with reference to the India's desert national park, which of the following statement is correct or are correct? पहला है इट स्प्रेड इन टू डिस्ट्रिक्ट, ये दो डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड है. देर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क. क्या लगता है आपको? डेजर्ट नेशनल पार्क में नो ह्यूमन हैबिटेशन, कोणी माणूस तिथे राहत नाही. दिस कुड बी करेक्ट और रॉन्ग? Wrong, sir. रॉन्ग हो सकता है. तो इफ इट इज रॉन्ग then we can eliminate option A, we can eliminate option B, we can eliminate option D also. Let's see third statement. It is one of the habitat of great Indian bustard. Yes, that is true. Great Indian bustard लक्षात है. Last year there was question about similar such bird. 2018-19 में ऐसे एक बर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था. रिमेंबर which one is that? और ये कहाँ पाया जाता है? That is also asked, right? Question was केवल जो घाना नेशनल पार्क ऐसे कुछ तो था. और करेक्ट आंसर. You remember which bird related question there was similar? ऐसे एक क्वेश्चन पूछा गया था. Great Indian hornbill, I guess. You remember that question? Yes, sir. Now this time they have asked question Great Indian bustard. Great Indian bustard म्हणजेच माळढोक, जो आपल्या सोलापूरमध्ये देखील सापडतो. मग हा जो माळढोक आहे तो फक्त सोलापूरच्या नानस वाईल्ड लाईफ सँक्च्युरी मध्येच नाही, म्हणजे बर्ड सँक्च्युरी मध्येच नाही. इट इज ऑल्सो फाउंड इन राजस्थान. राजस्थान आणि मध्य प्रदेशचा नॉर्थ वेस्टचा काही भाग आहे, तिथे देखील हा मोठ्या प्रमाणामध्ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नावाचा एक बर्ड आहे तो सापडतो. विच वन इज इंडियाज नॅशनल बर्ड? एनी आयडिया? भारताचा राष्ट्रीय पक्षी कुठला आहे गव्हर्नमेंटने डिक्लेअर केलेला? More. पिकॉक, हाँ. right? Government was thinking about declaring Great Indian Bustard as a national bird of India, but they have not declared so because ये bustard जो नाम है ना, BUSTARD, there could have been possibility of misspelling it and mispronouncing that, the what you can say the name Great Indian Bustard के बजाय हो सकता है people could have pronounced it as a Great Indian Bastard. That is why that has not been declared as India's national bird. So Great Indian Bustard is a very, what you can say, beautiful, grand bird. Even it is, grand than peacock. तो इमेज अगर आप निकाल कर देख लेंगे तो यू कैन चेक इट आउट. गूगल में सर्च करके देख लीजिए हाउ इम्पोर्टेंट दिस बर्ड इज. बट एनीवेज इसकी संख्या इंडिया में बहुत कम हो गई है. इट इज वन ऑफ द एंडेंजर्ड बर्ड स्पीसीज ऑफ इंडिया. Hardly around 250 birds are left in India now. Some of them are in Rajasthan, some of them are in Andhra Pradesh. Andhra Pradesh का भी कुछ हिस्सा है, वहां पर भी है. And some of them are in Solapur as well. Solapur, Ahmednagar, इस डिस्ट्रिक्ट में ये पाए जाते हैं. तो आप क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये जो इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क इट लुक्स स्प्रेड इन टू डिस्ट्रिक्ट. दिस इज ऑल्सो करेक्ट इवन इफ यू डोंट नो whether it is spread into districts or not. बट अगर आपको ये पता है कि इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क में मालढुक या इंडियन बस्टर्ड है, then you could have easily find out answer, that is 1 and 3 only. Is it clear? Second statement we can easily eliminate, that is there is no human habitation. ये गलत है. सियाचिन ग्लेशियर. सियाचिन ग्लेशियर नाम ऐकलंय कधी? न्यूजपेपर मध्ये येत असतो. मला वाटतं लास्ट इयर ऑल्सो देर वॉज क्वेश्चन ऑन सियाचिन ग्लेशियर इन 2019 ऑल्सो. Am I right? Yes.
सो क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा गया, सियाचिन ग्लेशियर इज सिच्युएटेड टू ईस्ट ऑफ अक्साई चीन. अक्साई चीन म्हणजे जम्मू काश्मीरचा हा जो पार्ट आहे ना, हा इकडचा जो पार्ट आहे ह्याला अक्साई चीन म्हटला जातो, जो आता सध्या चायनाच्या ताब्यामध्ये आहे. तो ईस्ट ऑफ अक्साई चीन और ईस्ट ऑफ लेह. लेह नाम याद है, न्यूज़पेपर में आ रहा था, लेह एंड लद्दाख. यस सर. यहाँ पर है तो ईस्ट ऑफ लद्दाख ले, और नॉर्थ ऑफ गिलगित, गुलगित वैली यहाँ पर भी एक वैली है. देन नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली. लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, नुब्रा वैली, सियाचिन इज लोकेटेड इन नुब्रा वैली, और ऐसे मैच द पेयर में क्वेश्चन पूछा गया था. रिमेंबर, नुब्रा वैली वाज देयर इन 2019 एंड ले वाज आल्सो इन 2019. क्वेश्चन अगर किसी ने देखा होता तो दिस क्वेश्चन कुड हैव बीन इजी टू फाइंड आउट, राइट श्वेता? So what is the answer of this question? Siachen glacier is located or situated what? नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली. नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली. वेरी गुड. लास्ट ईयर के क्वेश्चन में ये था. यस, ग्लेशियर रिवर के बारे में. यस. वेयर दिस ग्लेशियर्स आर लोकेटेड, राइट? अलग अलग ग्लेशियर के नाम दिए हुए थे उन्होंने, उसमें सियाचिन वाज आल्सो देयर, एंड वो कहां पर लोकेटेड ऐसा पूछा हुआ था. सो इट वाज लोकेटेड इन नुब्रा वैली. एम आई राइट? यस सर. चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फेमस प्लेस एंड वेयर दे आर लोकेटेड. ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कंटिन्यूअसली. सो भिलसा इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, द्वार समुद्र इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, गिरिनगर इज लोकेटेड इन गुजरात, एंड थानेश्वरा इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश. Each of the pairs above are correctly matched. By looking at the option, we can come to know that there are 2 pairs are correctly matched and 2 pairs are wrongly matched. द्वार समुद्र महाराष्ट्रामध्ये आहे. आर यू श्योर? द्वार समुद्र महाराष्ट्रामध्ये? कर्नाटका सर. It is in Karnataka. So since you are in Karnataka, it is an advantage for you to find out the answer of this question, right? So if 2 Yes, is sir. wrong, you can eliminate this, you can eliminate this, right? Sometimes आप जिस स्टेट से होते हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया तो आपको फायदा हो जाता, राइट? तो इफ लाइक यू नो लास्ट ईयर 2019 चंद्रभागा पंढरपूर ऐसे दिया हुआ था, तो महाराष्ट्रामध्ये राहणाऱ्या लोकांसाठी that question was very easy for us, right? Yes, sir. द्वार समुद्र महाराष्ट्र इज रॉन्गली मैच्ड. ठीक है. नाउ 1 and 3 अक्सर and मराठवाड़ा 1 में and 4. रहने वाले तो अक्सर मराठवाड़ा में रहने वाले लोगों के लिए तो और भी इजी हो सकता है. यस. ठीक है. स्थानेश्वर. अब यहाँ पे 2 ऑप्शन बचे हुए, 1 and 3, 1 and 4. तो 1 इज करेक्ट, मतलब भिलसा मध्य प्रदेश इज करेक्ट. अब बचा हुआ है 3 गिरिनगर गुजरात. यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज गिरनार, हैव यू एवर हर्ड अबाउट टर्म कॉल्ड गिरनार? गिर नेशनल पार्क सुना है? लास्ट ईयर क्वेश्चन 2019 गिर नेशनल पार्क से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया हुआ था 2019 क्वेश्चन पेपर में? गिर नेशनल पार्क, देयर इज एशियाटिक लायन. You remember? Asiatic lions are located in Gir National Park. So Girinagar, Gujarat is also correctly matched. So 1 and 3 only should be the answer of this question. Thaneshwara, Uttar Pradesh, ये गलत है. I think Thaneshwar is also in Gujarat, I guess. Haryana, sir. Haryana. What if? Where? Haryana. Haryana, sir. Yes. Okay. ठीक है. So the answer is 1 and 3 only. You understood how I am trying to find out the answer based on PYQ. यूपीएससी के पीवाईक्यू कौन तैयार करते? PYQ तो पहले से रहेगा, कौन तैयार नहीं करता. समझ, हर साल का क्वेश्चन पेपर जो रहता है ना, यू मीन टू आस्क यूपीएससी के क्वेश्चन कौन बनाते हैं? हाँ, जब अपन एग्जाम में जब जाते तब तक क्वेश्चन पेपर देते ना, तो उस पे कौन तैयार करते वो यूपीएससी? बहुत सारे लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो यूपीएससी के क्वेश्चन को बनाते हैं. समझ. चलिए, क्वेश्चन नंबर 99 ये हमने पढ़ा हुआ है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में. जेट स्ट्रीम ऑकर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली. द स्टेटमेंट इज करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट. Are you sure, Farzana, that jet streams occur only in the northern hemisphere? They doesn't occur in southern hemisphere? यस सर, नदर्न हेमिस्फीयर में ऑकर होते हैं. ना, हमने देखा है, मतलब इंडिया के लिए जो वो करता है, मतलब इम्पैक्ट जो करता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ कोर्स है, लेकिन क्या साउथ हेमिस्फीयर में जेट स्ट्रीम है ही नहीं? वर्ल्ड लेवल पर क्या?
हाँ, ग्लोबल हेमिस्फेयर का मतलब वही है ना, जेट स्ट्रीम ये ऑकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ओनली। सॉरी, इंडिया लेवल पर मैंने देखा। नहीं नहीं, हेमिस्फेयर की बात चल रही है यहाँ पे। जेट स्ट्रीम बोथ अकर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ओनली, साउथ हेमिस्फेयर में जेट स्ट्रीम नहीं होता, ऐसा पूछा गया। डू यू रिमेम्बर, मैंने जब डायग्राम ड्रॉ किया था जेट स्ट्रीम से रिलेटेड, तो मैंने ऐसे डायग्राम ड्रॉ किया था दैट यहाँ पर इक्वेटर है, तो वन जेट स्ट्रीम इज हियर, ये यहाँ एक राउंड करता है और एक पोलर लेवल पर होता है। उसी तरीके से साउथ हेमिस्फीयर पर भी एक जेट स्ट्रीम होता है। इंडिया के लिए असर करने वाला जेट स्ट्रीम ये है। गॉट इट? यस यस Okay. Second statement. Only some cyclones develop an eye. Cyclones, you remember? I know many of you have not attended my fundamental in physical geography class. Cyclone हमने डिस्कस किया था कि कुछ ही साइक्लोन्स आई डेवलप करते हैं, कुछ साइक्लोन्स में आई नहीं होता है। So is this correct, फरजाना? Is there any eye developed in the temperate cyclone? नो सर। No. सिर्फ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में आई डेवलप होता है, टेम्परेट साइक्लोन में नहीं होता। यू रिमेम्बर दैट? यस सर यस। So only some cyclones develop an eye. This is correct. Third, the temperature inside the eye of the cyclone is nearly 10 degree lesser than that of the surrounding eye of the cyclone. Eye of the cyclone पता है आपको, हमने डिस्कस किया था eye of the cyclone। यस सर मतलब हाइट this ना। is eye of the cyclone, right? साइक्लोन जहां पर आता है, ये जो रीजन है इसको हम आई ऑफ द साइक्लोन कहते हैं। या अगर हम सर्कुलर फैशन में अगर हम डिस्कस करेंगे तो ये जो होता है ये आई ऑफ द साइक्लोन होता है, सेंटर ऑफ, राइट? सराउंडिंग रीजन से साइक्लोन्स विंड मूव करते हैं। तो सेंटर में टेम्परेचर इज हाई और टेम्परेचर इज लो। टेम्परेचर इज हाई। टेम्परेचर इज हाई, दैट इज व्हाई at the center there is a creation of which pressure system, low pressure or high system? लो प्रेशर। यस, टेम्परेचर हाई और यहाँ पे लो प्रेशर, और उसी की वजह से सराउंडिंग रीजन में टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, तो विंड ब्लोज लाइक दिस। बिकॉज ऐसे ही सिस्टम में साइक्लोन डेवलप होगा वेयर देर इज अ लो प्रेशर इन द मिडल एंड हाई प्रेशर इन द सराउंडिंग रीजन। तो अब ऐसे अगर है तो द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ द साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री लेसर। तो लेसर ये जो वर्ड इस्तेमाल किया गया यहाँ पर हमें फोकस करना होता है, लेसर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और रॉन्ग? रॉन्ग। रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट, दिस इज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहाँ पे, मतलब इस बार 2020 से अगर हम देखेंगे, नाउ स्लोली स्लोली यूपीएससी इज मूविंग टुवर्ड्स theoretical questions or conceptual question. In 2020 they have not asked more question based on map, right? Like in 2016, 17, 18, 19, majority of the questions were map based, but this time they have shifted towards physical geography या फंडामेंटल्स इन फिजिकल ज्योग्राफी वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, साइक्लोन से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा, देन जेट स्ट्रीम से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा। तो ये ट्रेंड यहाँ से शुरू हो गया और वो 2025 तक है, मतलब 2024-25 also there were more physical geography questions were asked, and that is why Sagar wanted to have that discussion, right? तो ये ट्रेंड अभी 25 तक चल रहा है, तो हो सकता है 2026 में दैट ट्रेंड में कंटिन्यू और मे नॉट कंटिन्यू, कोई और नया ट्रेंड आ सकता है इन 2026। इज इट क्लियर? Anyways, so answer of this question is what? Third statement is wrong. So we can eliminate option B, we can eliminate option D, जिसमें तीन है। The answer will be either one only or two only. So one only या two only. So what is the answer, Farzana then? ओनली। Two only. Got it? So exam UPSC helps you in finding out the answer. Among the following, yes. फर्स्ट स्टेटमेंट सर। First statement is wrong. सर कैसे? Jet stream occurs in northern hemisphere only. हाँ सर, सदर्न हेमिस्फीयर में भी। Southern hemisphere में भी होता है। चल, among the following tiger reserves, which one has the largest area under critical tiger habitat? क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट कौन सा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पूछा गया? कॉर्बेट, रणथंबोर, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम एंड सुंदरबन ऑल आर द टाइगर रिजर्व्स, मतलब टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। सबसे लार्जेस्ट एरिया किसमें पूछा गया? कॉर्बेट इज लोकेटेड इन यूके, दैट इज इन उत्तराखंड। रणथंबोर इज लोकेटेड इन राजस्थान। नागार्जुन सागर श्रीशैलम इज लोकेटेड इन आंध्रा एंड सुंदरबन इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। तो सबसे
लार्जेस्ट कौन सा ऐसे पूछा गया है एरिया वाइज? ठीक है, इवन आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, मतलब बिकॉज ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। तो लार्जेस्ट एरिया सुंदरबन तो लार्जेस्ट है, बट वो इंडिया में नहीं है, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ द critical tiger habitat, under critical tiger habitat. ओके, सी सर। नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ठीक है। मे बी इट वॉज इन द न्यूज, दैट इज वाई ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे जो टाइगर रिजर्व्स या नेशनल पार्क विच आर इन द न्यूज, बिकॉज न्यूज़पेपर में आते रहते हैं कंजर्वेशन टॉपिक में, फजन यू रिमेम्बर? सर। तो उस समय में आपको ये कंजर्वेशन एफर्ट्स इन न्यूज, ये आपको अलग से नोट्स बनाने पड़ेंगे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। एनीवे, सो वन ऑफ द ट्रेंड व्हिच यू हैव फाउंड इन 2020 एग्जाम is that they are not asked more map based question unlike earlier, and they are asking more questions on this, that is, physical geography, like cyclones or jet streams and oceanic currents। ये हमने जो भी जीसी लियोंग में जो पढ़ा हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वी नेवर नो कि व्हेन यूपीएससी माइट चेंज द ट्रेंड ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन, बट हमें दोनों पढ़ना होता है, ठीक है। सो 2021, 22, 23, 24, 25 क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगी कि विच एरियाज और विच टॉपिक्स वी नीड टू स्टडी फॉर ज्योग्राफी। क्लियर? चलिए, सो शैल वी स्टॉप इट हियर? एनी डाउट्स? Yes, sir. यस, नागरत्न, एनी डाउट्स? No, sir. Okay. चलिए, so we'll stop it here. Continue your revision. I think all of you are doing polity revision, right? So polity revision, once you are finished, let me know. I will share, the geography notes as well, prelims exam point of view. तो geography का कहाँ तक आ गया रिविजन नोट्स अभी? साक्षी, कुठेपर्यंत केलंय रिव्हिजन पॉलिटीचा? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वगैरे केला आहे का? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टॅट्युटरी बॉडीज? यस सर. ओके, रिव्हिजन नोट्स मिळालेले आहे? नो सर. ओके, लास्ट टॉपिक नोट्स मला वाटतंय लॉ मेकिंग प्रोसेसचा प्रश्न म्हणजे नोट्स पाठवले होते ना पॉलिटीचे रिव्हिजन मध्ये. I will Yes, check sir. it out. What is the last topic or revision notes I've sent? I'll keep sharing the next topics, revise it. Once you finish with the polity, we will start a revision of geography. Fine?